Bismillah Rahman Rahim. Dr. Azra Pecho, Minister of Health, Chief Secretary Sohail Rajput, Dr. Sohail Rajput, wrong profession, I guess you're in, as I always tell you, Qasim Sumro Sahab. I will take names today because I need to mention the people who worked with the Sindh government, who made things possible for us to truly say excel in health services in this province of Sindh. I welcome Mr. Paul Hagan, the visiting faculty member from the UK. Thank you very much for coming. Dr. Mr. Shahid Abdullah, had the pleasure of working with him in the past also. Some things that we were able to do, others that we've not been successful in, but we'll inshallah work together to make sure that we succeed. Mushtaq Chhapra Sahab, Dr. Amjad Siraj Sahab, Dr. Saeed Qureshi Sahab, Dr. Tariq Mahmood. I see Dr. Jamal here. We worked together with him. Suhail Tabba Sahab, Ehsan Rabbani Sahab, so many others, and last but not the least, Dr. Saad Khalid Niaz and his entire team, the philanthropists who are here today who helped us with this project, faculty members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to come and inaugurate something that, as Dr. Saad so emotionally talked about, started in 2019. I know Dr. Saad for some time. Actually, I know him because of his late brother, who had worked with the government of Sindh and prior to that worked with me in Kuwait, and I met him. And he told me about this unit, and he asked me to come for this event for celebrating, I think, 10 years or 12 years at that time of this small unit that they had in Ward 4 at the civil hospital. The story that he told me was very inspirational. I said, he asked me for help, and I'm actually looking for help. I'm looking for help from people who've come and deliver, who can come and partner with the provincial government. We'll provide the resources. Resources, I've always said, is not a problem. The problem is people who can deliver. And I saw Dr. Saad very committed, very dedicated, and we went ahead, and by the grace of Almighty Allah, we are here today inaugurating this center. Just a few words. I know we've all talked about the center. I've not seen it yet, and I thought that's what I told Dr. Saad, that it would have been better that before coming to the event I would have seen it so that I could talk more about it. But then I've seen some pictures here, and I've seen everybody talk about it. So I'm sure we made changes. There's one or two things that I want to mention here. We've worked with philanthropists, and we work very closely. Mushtaq Chhapra Sahab is here, and I work with Patient Aid Foundation at the Hospital. And by the grace of Almighty Allah, I've heard these words before in other events, like Dr. Khalid, I think his name was Dr. Khalid Asad. He was saying that this is at par with, this facility is at par with any other, or Mr. Paul also said it's any facility in the UK. I want to come to a stage when doctors from UK and the US say that their facility is at par with any facility in Pakistan. The resources we'll provide you. I remember a few years ago, the president of the World Bank had come, and I started talking about health facilities. And I told him that we provide all this free of cost. And the capitalist mind that they have, and they said, why are you doing this? In his mind, I believe he was thinking, these guys are mad. Yes, we are a little mad when it comes to serving people. And as Saad mentioned, Dr. Saad mentioned, a person who comes to for health facilities, to come to a health facility, and he does not have
money, that is the worst part. I, as the Chief Minister, during these last few years, we've had lots of austerity cuts, all kinds of austerity cuts. But one thing, and the Health Department, Secretary Health will bear this out, that I send him almost every day a few cases of patients who cannot afford very expensive procedures, and they may be in private hospitals. If we don't have the facility in the government hospital, then we have to go to private hospitals. And one thing that I've never even thought twice about is allowing the funds for treatment of patients who don't have money otherwise. And we will continue doing that. Our facilities in the health, especially the tertiary health care, I congratulate the Health Department, Minister Health, for working hard for the last almost 5 years now. And we've made a huge difference from where we were 5 years ago to now, despite, as I said, all the problems. We had COVID, 2 years of COVID, 2 massive floods, and social media to top it all up, which has been a constant bother, to say the least, even the last few days. But despite all this, we've been able to succeed. And the reason that the government of Sindh was able to make a little mark in this was because we had people who had passion, who wanted to come forward. I went to Dr. Jamal's center a few days ago in Korangi, unbelievable. He's created a facility for children, which is, all the major hospitals, I won't take names, but I'd say all the major hospitals in Karachi, major private hospitals in Karachi, a few of them put together do not match the facility that we have at the Sindh government. You go to Gambat and see what they've done there. It's unbelievable. The Jinnah with the Patient Aid Foundation, by the grace of Almighty Allah, we've done wonders. We've only been able to do all this because we had people, passionate people who wanted to work. So I'd like more of you to come forward, try out the Sindh government. And साथ साहब, आप जब फ़ोन करते हैं, मैं एक्चुअली जब फ़ोन मिस कर देता हूँ ना किसी का भी, और उनमें कुछ लोग हैं, तो मुझे परेशानी होती है कि यार मेरे से फ़ोन मिस हो गया, and I should call. And there's times when we do, and in the last few weeks also, ये मुझे फ़ोन करते हैं, मिस करता, मैं नहीं करते थे, ये बिजी होते थे, ये नहीं जवाब दे सकते थे. So अब कहीं से भी हम अरेंज कर लेते हैं, अगर हमें सिर्फ लोग मिल जाए. मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमें पैशनेट लोग चाहिए जिनको जो सही तरीके से काम कर सकें. मैं इधर बैठा था, डॉक्टर सईद ने एक बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर हेल्थ साहब बैठी हैं, and he talked about the maintenance issues at the civil hospital. प्लीज़ आए, देखें क्या किया जा सकता है. पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग जो है, मैं पूछ रहा था 1890s की बिल्डिंग है, but this is not the oldest. Dr. Saeed told me that the burns unit is the oldest in civil hospital. So I don't know, fight it out. आप लोग जो भी करना है. So खैर, but पुरानी buildings हैं, हमारी heritage है, we have to save them. At the same time, we need to make it safe, and we need to make them operational. जो भी issues हैं, दो डाव में मैं जब आज enter हो रहा था, I had 3 sisters who went to Dow Medical College. और उस ज़माने में जब हमारे ने lots of friends मेरे साथ जो obviously कराची के पढ़ा हूँ, डीजे साइंस कॉलेज में जो भी प्री मेडिकल वाले थे वो सारे इधर आए, जो दोस्त तो उस ज़माने में आया करते थे. तो डाव की अलग ही होती थी. आई कांट रिकॉग्नाइज इट. मैं पहले खैर बीच में रोबोटिक्स सेंटर के इफ्तिताह करने आया था, तब भी मैंने देखा था, तो बहुत फ़र्क पड़ा है. बट जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना, दे आर ऑलमोस्ट सेंचुरी एंड हाफ ओल्ड, मोस्ट ऑफ देम. उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और उनको ऑपरेशनल करने के लिए जो मदद चाहिए, सेक्रेटरी हेल्थ बैठे हैं, मिनिस्टर साहब बैठी हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, प्लीज़ अभी भी इस वक्त वी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट ईयर्स बजट, वट एवर यू नीड टू मेक श्योर
that the infrastructure doesn't collapse here, because obviously you, as Paul said, you need to build and people come, but if the buildings are not there, people will go away. We need to make sure that we maintain our buildings, और उसके लिए जो भी चाहिए प्लीज़ इसको फॉलो अप कीजिएगा. मैं और टाइम नहीं लूँगा, तो I had this written speech, I don't know what was written in it, मैंने छोड़ दिया है. जो भी होगा मैं मुबारक देता हूँ डॉक्टर साद को, इनकी पूरी टीम को जो इधर है. मुझे याद है अबाउट व्हेन 2020 था, कोविड में, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, 2020 था कोविड में, एंड ऑफ 2020 आई हैड अ लिटिल इशू और कोविड के बाद, और मुझे एडवाइस किया गया कि आप ये प्रोसीजर एक थोड़ा करा लें. तो आई वेंट अब्रॉड फॉर दैट प्रोसीजर. मैंने डॉक्टर साद से कंसल्ट नहीं किया, वापस आए तो इतना नाराज़ थे मेरे ऊपर कि आप इतना दूर क्यों गए, आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए, ये चीज़ हम इधर भी कर सकते हैं सारी. तो वही ना, हमें अब वो कॉन्फिडेंस है, तो वो प्रोसीजर इधर ही कराना था. मैंने लेकिन बाहर चला गया था, अगेन कुछ डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि चले जाए. बट आई टेल यू, जो भी हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो बात है, ये एक एक प्रोसीजर टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करता है जो हम इधर मुफ्त करते हैं. जो डॉक्टर तारिक, उनका जो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट करता है JPMC में, इट इज़ runs into hundreds of thousands of dollars. NICVD में जो हम कर रहे हैं, यहाँ SIUT में डॉक्टर अदीप रिजवी के साथ जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इट कॉस्ट मनी. आप एंड में इतना कि हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट इन द लास्ट 5 years हैज़ गॉन अप 5 times at least I think, और इट विल ग्रो इवन फर्दर, बिकॉज ये जो फैसिलिटी हम बना रहे हैं, इनको रन करने में और ज़्यादा लगती है और कॉस्ट. लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि सिंध हुकूमत के साथ जो फिलैंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉब्ली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ द हेल्थ सेक्टर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध. एंड आई थैंक द फिलैंथ्रोपिस्ट, आई थैंक द पीपल. सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं हो, मैं भूल जाऊंगा, इतने सारे हैं, देयर टू मैनी. कराची शहर जो है वैसे ही मशहूर है फिलैंथ्रोपी के लिए. तो मैं कहूँगा और सामने आए, और हमारे पास डॉक्टर साद जैसे, डॉक्टर तारिक जैसे, डॉक्टर जमाल जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये पैसे और जो आप दे रहे हैं वो सही इस्तेमाल होंगे. और सिंध हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि इस मदद जो आप हमारी कर रहे हैं उसमें कोई problems now. So, once again, I thank you for inviting me here today. I also remember Dr. Saad telling me that I won't inaugurate this unless you come here. तो मैं जो सब जानते हैं, there are so many things that we've done here, I don't go and inaugurate them. हमारे पास इतना, अगर मैं वो inaugurations का इतना शौकीन हूँ, तो मेरा ख्याल है मैं और कोई काम नहीं कर सकूँगा, इतना काम हमने कर दिया है, even in this city. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि दिल के करीब हो जाती हैं, and some people I just can't say no, and Dr. Saad is one of them. So, come here. Best of luck with this facility. इंशाल्लाह ताला आपने और आगे बढ़ना है तो सिंध हुकूमत तैयार रहेगी. जैसे डॉक्टर अजरा ने कहा था, यहाँ पे हमें वो टावर के लिए we have the funds available and we'll make the funds available. Just give us proper space. एक डॉक्टर सईद और डॉक्टर अमजद सिराज भी मुझे नज़र आए थे. एक इशू आप दोनों के साथ है, मैं प्लीज़ आप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ रिजॉल्व दैट फॉर मी. वो जो है दैट इज़ अगेन समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो उस चीज़ को भी रिजॉल्व करें. और वो जो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम मेरे पास लेके आए, चले उनके साथ कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व करें इस चीज़ को. तो ये बस मुझे कुछ कहना था. आप एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने का, और इस मौके पे जो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है हमारे साथ रहने का. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.